Hello GMAT aspirants, welcome to your channel GMAT by PW. My name is Rahul Bartla and you see a world map behind me. The point is why? The idea is most of the GMAT test takers actually they look for West, they aim for West. Ab, from the past 15 years जब बच्चे आते हैं and I talk to them and कहाँ जाना है सर GMAT कर रहे हैं West ही जाना है. But there are majority of Asian B schools that are rising very quickly, reputation rising very quickly, and they also provide you a great ROI. So you can definitely target them looking at the present circumstances also. Right, when we see that the global instability is in progress a little bit, right? Every day we are getting the headlines. So if you want it to be nearby your region in Asia, then I'm going to give you top 5 Asian programs that actually provide you a good ROI and a less burden of the loans as well. All right. So if we talk about the map, right, I've just covered the US side. We are talking about the Asian region. So the 5 programs which I'm going to deal with are, based in the countries. Hyderabad, of course, you can judge from the Hyderabad. I'm going to talk about ISB. Right, Shanghai in China, and then we have Hong Kong, and then we have Singapore. Right. So the point is, one thing, of course, they'll be little less costlier. Now the point is, of course, यूरोप के सामने थोड़े से लेस कॉस्टलियर साइड पे आपको मिलेंगे, बट ऑफ कोर्स वी नो दैट एमबीए प्रोग्राम्स, राइट, द फीस आर जनरली हाई, तो ऑन द हायर साइड ही रहती है, बट इधर से कम बर्डन आपके ऊपर आता है. सेकेंडली, दे आर लोकेटेड कंपेयर टू दिस पार्ट लिटिल क्लोजर टू अस, तो एक्सेसिबिलिटी और ट्रेवल अकोमोडेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है. अकोमोडेशन तो नहीं, बट ट्रेवल यस, राइट. So let's go ahead and talk about the 5 programs, right, that are based on these 4 countries, or that are in the colleges that are based on these 4 countries, right. Let's go ahead. First, let's talk about NUS Singapore location. Of course, Singapore. The average GMAT that is required is 710 and 655, so well in reach, right. तो अगर आप ये 655 के आसपास मार सकते हैं फोकस एडिशन में, ये पुराना एडिशन, अगर किसी के पास 3-4 साल पुराना वाला स्कोर पड़ा है तो then you can apply over here. The fees is $77,000, all right, and the return, the median salary is $90,000, all right. Now see, of course, these numbers can vary a little bit, right, as per the 2024 programs, and I'm talking about the PGP flagship programs, right. The duration is 17 months, थोड़ा सा longer है. Generally students they eye for 1 year MBA, right. तो मैं 1 year MBA वाले भी programs आपको दिखाऊंगा, but हाँ, यहाँ पर 17 months ड्यूरेशन है. वर्क एक्सपीरियंस जो मिनिमम रिक्वायर्ड है वो 2 years है. व्हेन यू विल गो ओवर देयर, द पीयर यू विल गेट हैव द एवरेज वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 6 years. व्हाट इज द हाईलाइट ऑफ दिस कॉलेज? If you are interested in consulting and the finance, then this is a very good option in Singapore. Living style, lifestyle good, right, easy to go, visa problems not too many for the Indians, so you can get the access, right. You just need this score and a good profile. If you're looking for finance and consulting, definitely one of the go-to college. NUS आपको टारगेट करना ही चाहिए, राइट. सिंगापुर में भी है, राइट, फ्लाइट्स ज्यादा हैं इंडिया से, कंपेरेबिलिटी फ्लाइट टाइम कम है, फीस इज ऑल्सो ओके, राइट, कंपेयर टू यूरोप साइड, राइट, क्लियर. So this was the first college, NUS Singapore. आगे चलते हैं फटाफट, quickly a short video will talk about multiple colleges. INSEAD FT ranking 2. You must have heard about this particular college. The fees of this particular college is a little on the higher side. Of course, you know why. 115K is the fees, but the return again, ROI is more than 100%. $125K median as salary. Again, Singapore का second option, right. तो सिंगापुर इज नोन फॉर द गुड बी स्कूल्स. अच्छा कल्चर है, अच्छी डाइवर्सिटी आपको मिलेगी, अच्छे लोग आपको मिलेंगे, सीखने को मिलेगा, पीयर वुड बी गुड, इवन यू गेट द इंडस्ट्रीज इवन दे, तो इंटर्नशिप और केस स्टडीज वहां जाके काफी कुछ सीखने को मिलेगा. एवरेज स्कोर 710, ओल्ड जीमैट. फोकस 675, थोड़ा हायर साइड पे है, मुश्किल होता है लाना, थोड़ा मेहनत लगेगा आपको, राइट, बट ऑफ कोर्स यू कैन डू इट. वर्क एक्स रिक्वायर्ड 2 years, एवरेज 5 years, ड्यूरेशन 10 to 12 months. तो अगर आप 1 year MBA शॉर्ट एंड क्रिस्प फटाफट जाके खत्म करना चाहते हैं MBA, so this should be on your cards. Of course, the only thing which you have to focus here is 115K fees, right, the program fees, the tuition fees. तो ये थोड़ा सा आपको देख के चलना पड़ेगा कि whether you can afford it or not.
राइट, या इतना अफोर्ड की बात तो नहीं, खैर you know you have to take the loans and then there are scholarships. So if the budget is a constraint, then start looking for the scholarships that I offer and you can accordingly apply. All right, तो इनकी पर्टिकुलर कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाके आप डिटेल ये भी देख सकते हैं कि कितने प्रोग्राम्स ये लोग लेते हैं, एक साल में कितनी बार बैच स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर द राउंड्स, व्हाट आर द डेडलाइंस। बाकी डेडलाइंस के अकॉर्डिंग वीडियो हम ऑलरेडी इस चैनल बना चुके हैं, बट अगर आप किसी स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, यही सब डिटेल्स with the deadlines you can leave in the comment, we'll keep leaving those videos here. All right, let's move on to the third college for the day, and that is Hong Kong University, HKUST, Hong Kong University of Science and Technology. Location Hong Kong, right? Average GMAT 680, 635. So this is well within reach, right? 635 तक अगर आप थोड़ा सा dedicatedly prepare करो तो पहुंच जाते हो. So in case if you're struggling with your GMAT score, then this one is a good option. The fees $75K. It's all tuition fees. वहां जाके जो आप रहेंगे, बाकी चीजें करेंगे, वो अलग है, इसमें काउंटेड नहीं है. Median salary 74K, almost around 100% ROI as per their brochures. Highlight Asia China network अच्छा मिलेगा आपको, right? So if you're looking to go ahead and work in this Asian Pacific region after your MBA, then this one is a good option. A good reputation है इसकी. Work ex required 2 years, average you'll get 6 years of you'll get the people with 6 years of working experience. Time duration again a short and crisp MBA, 12 months, standard 1 year MBA, go get it done and you can apply in this particular network. All right. The good part is it is reachable, right, in a short tenure, right? 675, 685 and 635. These 50 points are huge difference. वो लगेगा कि 600 के सामने 50 के, ऐसा कुछ नहीं है, right? After 635, every increment of 10 points even takes a lot of efforts, right, my friend? So in case we are stuck around 635, 645, or in case we aimed for 675, आ गया 635, आप stuck हैं, दोबारा देना है कि नहीं, so this can be one of your option if you're looking for Asian region. And I particularly am okay with Asian region. ये जबरदस्ती का जो हम craze हमने बनाने हैं, European, yes, you get more opportunities, you get more exposure, you get more variety, diversity, but again, all right, there are the perks for these Asian colleges as well. Asia China network का access, and along with that, of course, budget constraint है, तो of course they are better. All right. Going ahead, guys, then one from our own beloved country, India, and that's ISB, Hyderabad and Mohali 2 campus. Now here, the GMAT score required is little higher, right? It's one of the best in our country. From GMAT, I'll say the best. And that's why you see this 675 number. Fees $40K. I've converted into dollars, right? You can convert it into lakhs, somewhere around 30 to 34 lakhs. Median salary $39K. Again, you can see almost 100% of ROI. Strong brand in India and Asia. I would say strongest, one of the strongest in India. If you compare with IIMs, then ABC and ISB very much comparable. And the average work experience you'll see over here is 4.5 years, young people. And the minimum requirement is 2 years, duration again a 1 year course, right? So all majorly have 1 year course. ठीक है, the first one we talked about was 17 months, but majorly आपको 1 साल के course यहाँ पे देखने को मिलेंगे. Alright, so it's time that we move to the final college of our Asian B schools list. We have CEIBS, and that's China European International Business School. Right, so of course, a location Shanghai, China. Right, average 690, 655. So again, a reachable, decent score. 655 तक पहुंचा जाता है. देखो 645, 655 ही वो बेंचमार्क है जहां तक पहुंचा जाता है. उसके ऊपर ना कहानी थोड़ी सी टफ होने लगती है. So when you look for the score like 675, it's little unreachable. उसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा लगती है अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है क्वांट के या वर्बल के, राइट? बट अगर वो स्ट्रांग है तो फिर तो एनीथिंग इज रीचेबल, या आप मेहनत करने को तैयार है तो एनीथिंग इज रीचेबल. बट दिस ऑफ कोर्स इज क्वाइट इन आवर डोमेन एंड रेंज. फीस 69 के. तो ये सब जो मैंने आपको दिखाए बजट, अपार्ट फ्रॉम द इंडियन वन दैट इज अराउंड 40K, बाकी सब आपको 60 to 75K में मिल जाते हैं. आई को छोड़ दे, इंसियाड को छोड़ दे, दैट गोज बियॉन्ड 100K. Median salary 98K. So do you see the ROI? That's great as per their brochure. This is ranked 1 in China.
एंड यू गेट ग्लोबल फैकल्टी। तो एक्सपोजर अच्छा आपको मिलेगा, लर्निंग्स आपको अच्छी मिलेंगी, वेरियस बैकग्राउंड से मिलेंगी। वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड 2 years, average of 5 years, duration a little longer again 16 to 18 months. So I guess you must have made an idea कि एक चीज तो ये है कि मिनिमम 2 साल से 3 साल का एक्सपीरियंस सब लोग मांग रहे हैं। एडवाइजेबल भी यही है। अगर आप एकदम फ्रेशर हैं, देन रादर देन एमबीए यू शुड लुक फॉर एमआईएम कोर्सेज, राइट, दे आर फॉर फ्रेशर्स। क्योंकि ऑल द स्कूल्स, ऑल द बी स्कूल्स ऑफरिंग यू द प्रोग्राम्स फॉर एमबीए, दे रिक्वायर थोड़ा सा बेसिक वर्क एक्सपीरियंस। वो सीख के आओगे तो better learnings होगी। and if you notice average years of work experience you see in these colleges again 5 years, right? तो एक चाहते वो इस रेंज के बच्चे हैं, 2 से 6 साल, 2 से 7 साल वाले, right? So if you belong to this area or this particular type of people in the mid career or at the start of the career, that's nice, all right, you can apply for these budgets. That is why I brought these two parameters definitely. GMAT score, one of the most important parameter, क्योंकि हम क्या पढ़ना है, कितने लेवल तक पढ़ना है, वो भी जानना जरूरी है। alright? So now when the next time we meet, it should not always be कि सर मेरे को तो बाहर ही जाना है। बाहर कहाँ जाना है सर? वेस्ट। वेस्ट 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 ऐसा नहीं। इट हैज टू बी यू देर आर मल्टीपल प्रोग्राम्स, अराउंड 2000 ऑफ देम। अगर आप उसमें सिर्फ एक्सप्लोर 10-12 करोगे तो आप अपना कॉल नहीं पहचान पाओगे, राइट? देर आर मल्टीपल थिंग्स। अब इन सारी चीज़ों को आप जाके रिसर्च कर सकते हो, सारे कॉलेजेस की वेबसाइट्स पे जा सकते हो, देख सकते हो इनके आरओआईज क्या हैं, इनमें स्कॉलरशिप कौन कौन सी हैं, मेरिट कैसे जाता है, कब कब राउंड्स हैं, एंड अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो लुकिंग एट योर कन्वीनियंस कि these are the things what I want, these are the parameters the college asks, and accordingly you can choose wisely what kind of college you are looking for. And these were some top 5 Asian colleges. If you're looking for some specific other region, let us say Australian colleges, or maybe you're looking for colleges, let us say in Canada, or maybe again US as well, we'll create the videos for that as well. All right, I hope you enjoyed this video. Leave in the comments what actually you're looking for, and we'll make sure that we create the videos on that. Take care, all the best. See you in the next session. This is Rahul Bartla, GMAT 780 and CAT 99.95 signing off. Take care.